विचर आप किरपाल विचर आप किरपाल विचर मूल ना थोड़ी विचर मूल ना थोड़ी विचर आप किरपाल सब दिन खोटे बाबा नानका सब दिन खोटे बाबा नानका आए खर्च धनवान आए खर्च धनवान विचर मूल ना तोड़ी दो विचर मूल ना तोड़ी दो विचर आप किरपाल विचर आप किरपाल हम वे कांदड़े चेला हम वे कांदड़े चेला इन्ना स्वामी तो इन्ना स्वामी तो तन जड़ाई आपने तन जड़ाई आपने लासो सजन डोर लासो सजन डोर विचर मूल ना थोड़ी दो विचर मूल ना थोड़ी दो विचर आप किरपाल सब दिन खोटे बाबा नानका खाए खर्च धनवान विचर मूल ना तोड़ी दो सजन सच्चा बात सो सिर सहादे सजन सच्चा बात सो सिर सहादे जिस बात बहते आंसू ही जिस बात बहते आंसू ही सपना दावे सपना दावे विचर मूल ना तोड़ी दो विचर आप किरपाल सब दिन खोटे बाबा नानका खाए खर्च धनवान विचर मूल ना तोड़ी दो विचर आप किरपाल Today we are going to start on a journey together
and we're going to look at some of the things that brought the revolution to the human consciousness, a spirituality that disappeared due to the influence of ritualism in all of the predominant organized religions of that time prior to Guru Nanak appearing on the scene. And if you look back, even prior to that, no matter how far you go in the past, you will find that every Messiah, every messenger, every Payghambar, every enlightened soul looked at the same words that were said before them and reinterpreted them as they were supposed to be interpreted, as they were meant to be interpreted. There is a quotation in India that says, "Ganga जैसे जैसे गंगोत्री से दूर चलती गई, वो मैली होती गई." What does that mean? As the distance from the source, more is the impurity. The significance is lost, the message is lost. Then only the written, dead words are left, and the spirit flies away. In order to rekindle the spirit, Gurvani says, "Har jug jug bhagat upaya." Means what? Har jug jug. Throughout the movement of time, the ultimate creator has appeared in the physical dimension to rekindle the real spirit. But in Gurbani says, "Tat vichar yahe mathura, jat taran ko avatar banaya." Tat, the essence of all the thoughts, I can actually condense into a single statement. That's what Bhatt is saying. Tat vichar, the thought, the most significant conclusion of what I have seen through this is because they had seen 5 masters after the Guru Arjan Dev. After that they had seen all of them. So tat vichar yah, the only yahi, this one. Which one is that? Say jat taran ko avatar banayo. The ultimate creation, ultimate creator takes a physical form, and that the physical form is called avatara. वो अवतार तारदा है, लेंदा है, क्यों? यज्ञ तारण को. So that somebody can get back on the track because they have lost. They have lost the purpose, they have lost the message, it has become totally disillusionment all over the place. And so today we are going to go on the journey as an introduction to. We will start with this on the very first page of Yoga Inside. For those of you who have not had the opportunity to see, read, or be introduced, I'll give a brief description. Guru Granth Sahib is an anthology of a collection of spiritual hymns gathered over about 225 years of span of life. It contains Vani. Now, remember, these are not the writings. Very significant to understand. These are not the writings. Even though they appear to be, paper de utte likhe hai, so writings nahi kahange to ki kahiye. No, a poet writes a poetry. A philosopher writes a book. Spiritual masters don't write anything. They are the messengers. That's why उन्होंने Messiah है.
Pagam and Pagambar. Pagam means message, Pagambar means the messenger. They add nothing, they modify nothing, they subtract nothing. They don't sit in judgment, they don't say it's right, wrong, indifferent, they just deliver. And even that is inaccurate to say they deliver, because that means they are a doer. The delivering is happening through them, they are just vehicle. It appears to us that they are delivering, but they are not. They are not there. The delivery isn't there. That I isn't there. The doer is not. Just as you hear the words coming out of my mouth and say, just one thing carry, that's inaccurate. It appears so. And that's why the term for this is Bani. Akashvani. What does that mean? See, the sound waves are all over. Energy can neither be created nor destroyed. It's a scientific principle, isn't it? So, the sound energy that is being projected right now is still part of the cosmos. Right now, your instruments are tuned and they are catching that energy, that frequency. If they were not tuned, then you won't catch it, it will still go. मुंह का कया वाओ हवा बन जाती है. That's it. So one is there, but the radio tune catches and say Akashvani ho gaya. All that is happening is these physical bodies of those avatars are tuned to catch the message that is coming, and they just broadcast, and hence that's why it's called Bani. To us it comes in the forms of black ink on a white paper, because that's the only vehicle available. If there was any other vehicle, meaning if we were sitting next to the Master, the enlightened one, and he or she could just transmit the energy through to us, there will be no need of piece of paper. And the reality of lot of that can be delivered and given is never said. So this anthology that we are going to be getting into, it has 1430 pages, but they are not the normal size. Mathematically speaking, there are about 60,000 lines in it. If you count by with the help of computer, you'll find there are about 2.3 million characters in it. It has been collected over, as I said, 2 centuries plus. It contains that which came through the 10 masters, 9 masters. 10th master did not include anything of it. Guru Gobind Singh is not documented in that, not a single word. Those who you hear, this is what Guru Gobind Singh said, Guru Manyo Granth, etc., this is all false. It is not part of Guru Granth Sahib. दोहरा जड़ा पढ़ देने आ गया भाई अकाल की, that's not part of Guru Granth Sahib. Similarly, about 17 Bhagat, Shiromani Bhagat being Kabir, Farid, Ravidas, Ramanand, Surdas, Faridji, Jaydev, all of these Bhagats there, those writings, those words, those messages which pass the test that they are talking of spirituality. That's the key. Nothing in that is included that is not pointing out to the spiritual fact. The words, the examples, the similes, the parables, the stories, they're all pointing out to the one single fact. What is that single fact? How to help the Jiva Istri to get to the Paramship. How to take you from here, from the physical dimension, and help you to get on the path of the ultimate. How can be one with the one? That's the only objective. There is no criticism of anybody. Everything is supported by Bhakti Marg and Gyan Marg combined. Then there are also
the Vani of those Brahmgyanis, those who stayed in the presence of the masters and achieved that, and they are called Bhat. Now their language and their styles are different, and their similes are different, but the message is still the same. In Sikh world, this has become a very controversial. Patan di Bani jehdi hai Guruan di tarikh vich hai. I am not in agreement with that. All Vani is in his Uspati. Has nothing to do with it. Because they did not recognize the difference. They did not see the body sitting as Guru Ram Das's body. They saw the ultimate creator through, and they are addressing that creator sitting in that form. They are not talking of Angad, they are not talking of Nanak, they are not talking of Arjun. They are talking of the one that is personified there. What is personified? That's the line I just read to you. Shabd Akhut Baba Nanaka. Those who became Shabd Japde Japde, Shabd Roop hoye. Tu karta, tu bhaya. Mujhme raha na tu. So they are seeing that too, even though the physical form and the time appears to that this is the body belonging to this and this is the body, but they are not seeing that. Hence they are not addressing that. That's why it is included there. A little bit more about that. All of the writing is in poetic form, except the first 10 words are in prose. Everything else is in poetic form. The first 10 words are prose, and we will start with the first 10 words. Anything that can be said and pointed out that cannot be explained through logic and science and mathematics, you take the help of poetry. The poet has a very free hand, a license. Poet कहते तेरे बाला च मस्या आई हुई है ना, मस्या चार थोड़े थोड़ी आ गया, तेरे बाला च मस्या. Now he can say that, right? Because there is no other way to explain, and the poet can take तेरे गुलाम च शाहिद है, तेरे हाथ फुलानियां पंखड़ियां हैं. Means what? There is no other way to say. So he takes the liberty and try to explain the softness, fragrance. चंडाल वर्गा गुस्सा. अच्छा चंडाल किसी ने देखा ही नहीं. कभी तो जैसे चंडाल आया कोई. Anybody seen a ghost of that nature with the wings and this? But चंडाल वर्गा गुस्सा. How do you know? चंडाल तो कभी देखा ही नहीं. But we compare that anger. A poet can say that. A mathematician cannot. A scientist cannot, because scientist has to find the precise definition. This is the language of a poet, because the things that are going to be said, they cannot be explained. Something that cannot be said, but it can be only compared, even though it's incomparable. How would you define God? If a child was to ask you, define God, what would you do? Because every definition needs a boundary. Right? To define something is to put a boundary, limits around it. So how will you define God? You can't. The question is irrelevant. But you still want to point out to the energy. So will you take the help of the poetic language? Hence, all of the Vedas, Puranas, Shastras, Simrtiyas, all of them are in poetry. Anything that has to do with the spiritual is in poetic form. And the poetry can say in such a brief thing which the whole essay cannot say. And that's why the translations fill volumes up. They still cannot come close to it. Those avtaras, those things, can say something in one sentence. And we'll get into the example in a minute. That cannot be said by writing volumes. Okay, so that's the first thing, that is in poetic form. Secondly,
Majority of the Banis is in ragas, pure classical ragas. There are 31 of them. There are few Banis which are not in ragas. Soye, Shant, Kone, Chaubole, ये जड़ियाँ पटाने सोये, Jap, they are not in ragas, but they are still in poetic form. So you see, poetry is represented, prose is represented, ragas is represented, and non-ragas is represented too. And it was collected. Whatever was spiritual, it was included. The first anthology was created by the fifth master. And then, the final form that you see today, 1430 pages, was compiled by Guru Gobind Singh in what is called Damdama, Anandpur, the Ilaki. Bhai Mani Singh was the scribe. And then he included the ninth master and few other saints and gave this final shape. What is the Granth today? That and Guru Gobind Singh never said what we say. Sab Sikhan ko hukum hai Guru maan lo. Yeah, samajhaya. Because the purpose and the objective was not to give something to worship. Why did he have to do that? Why did he need to compile something? Its roots are somewhere else and we have taken it somewhere else. Those who do the studies of comparative religion, a religion needs three things to be recognized as a religion. Okay. The first thing, the master or the originator must declare that between me and the ultimate creator there is no mediator. I am in direct contact with the ultimate source. It is a requirement. Otherwise religion cannot be a religion. Jesus did, Muhammad did, Buddha did, Moses did, so did I. Look at all of the major religions. Now here is an interesting observation. That's why Hinduism is not called religion by the comparative religious scholars. It is a culture. Sabhyata hai. Why? Because no one stood up and said, I am starting it. किसी की गीता है, किसी की रामायण है, किसी की महाभारत है, किसी के देवी हैं, किसी के देवते हैं. Everybody has their own. Hence, collectively speaking, Hinduism cannot be called a religion by these comparative standards. It is a culture, it is a sabhyata. It's a way of life, that's it. The second requirement. For a religion to be recognized, it must have its own book. Christians, Bibles, Jews, Torahs, Buddhism, Dhammapada, Islam, Quran, and so on and so forth. Whatever is the message must be compiled and delivered in the form of a book. And say, this belongs to this religion. If that cannot be claimed, it's not a religion. And that's the problem with Hinduism again, because they cannot say, this is one. They can point to the Vedas, but there are a lot of them. Puranas, Simritis, all of them. There are so many of them. Well, which one is? No, all of them are. Or none of them is. And they realize that again. And the third one is that they should be identifiable by some means. They are the one. If you cannot identify, there is no identifying symbol. Again, the religion cannot be, and you look at that, each organized religion has a symbol. Symbol. Huh. Yamaka for the Jews. Islam, the Kalma. Identify one way or the other that this is what you belong to. Then in the society, in the outer world, you can claim yourself to be a religion. So if
For 225 years, there was no need to do the method continued. Guru Gobind Singh then gave it its form, shape and size so that you can be recognized. But there is no more need for any more mystical spiritual literature because there are 1430 pages already. All saints from 14th century onward, 12th century actually, Free belongs to 12th century. 12th century तो लेके जितने भी कॉन्टेक्ट खींचे जा सके और उन्होंने जो भी पिकअप खींचे जा सके उसका निचोड़ essence was included. Bhakta Ramananda is there. Bhakta Jayadev is there. Jayadev was Brahman. सारी उम्र ज्ञान मार्ग करे उसकी बाणी यदि औखी है संस्कृत की बहुत औखी बाणी भक्त रामानंद जैसे कि कबीर जी ने जलाल जैसा बनाया Surdas has only one word, one sentence. In whole Shivan said one sentence by Surdas. Chad re Bemukhi inka son Surdas. That's it. And all of this anthology then was presented as what? What was the objective of Guru Gobind Singh? Number one, that it was required as an organization. And secondly, Bani had said, it is documented in the Bani, saying, Pothi Parameshwar ka than. In this, Pothi means the book. In this book, the message from the highest, Parameshwar. So, what is that? Sarad sang gaave gun govind puran brahm gyan. So brahm gyan nu ki karna kehna samjhe sujhe pad bujhe antanarantare sacha. Then I am giving you the gyan. Now you need to open it, study it, internalize it, implement it. तो सच्चे का ध्यान अंदर आ जाएगा. Why? Why would he make such a claim? Because this is the only one in the history of mankind that the method was repeated. Whatever Nanak didn't stop there. It was physically repeated by Angad. Bhai Lehna actually followed exactly and achieved to that state. Then Baba Amar Das followed and repeated exactly the method and achieved that state. Bhai Jetha, who became Ramdas, repeated the same thing and followed that state. If you look at Buddha was one and it was done and he for 40 years did. Jesus did once. Muhammad did once. There were now 10 Muhammads following behind him saying, whatever you are, the way you achieved it, the way we can achieve it also. That was never proven to the mankind before. The first time in the history of human consciousness, what is documented in the Granth was repeated and proven and documented for the first time. And then ninth master, Guru Tegh Bahadur, did it again. 26 saal, 9 mahine, 13 din, sat in Bakala in a small hut and meditated and followed the process. And when he achieved the ultimate, only then he got known to the public. Otherwise, he was another son of the 6th master. That's it. He was not known before. So Chugagat is. Most of you have read the story of Lakhan Shah Lubhana, etc. But that's, is not significant to the significance is that he again followed the same path, achieved the ultimate, and proved that for 225 years, this method, those who could understand and implement have actually achieved it. Not once, not twice, not thrice. So if you are sincere and serious and really wants to, and you are desirous of achieving then follow it. ये नहीं कि भी एक्सीडेंटल हो गया, एक बार हो गया, गल खत्म हो गई. आज भी नानक तो उत्थों ही लैके आया सीगा, असीं कित्थे आ सकने. रामा अवतार तो उत्थों ही जम्मिया सीगा, असीं की कर सकने. कृष्णा तो उत्थों ही जम्मिया सी, असीं की कर सकने. Everybody can say that, well, no, Krishna was born with it. What can I do with it? I'm not born with that.
That's why Rama is called Avatara, because he was born with that. In Gurmat, that excuse is not there. He said, no, wait a minute. Lehana wasn't born with it. He came to the master, he got the message, he implemented the message, and he achieved to the ultimate. And so on and so forth. So Guru Gobind Singh had no reason to say that this is something that you need to worship. He said this is something you need to understand. Baba Nanak says, Ped padya nahi. The secret is not in reading. Ped padya nahi. Kis tarah kande bujhiyan pavana. Find the secret. Try to understand what's behind the words. Because the words are the words of a poet. शाहां दे विच खुशबू फुल्लां जैसी है, that is, मैंने कुछ फुल नहीं आए कहते ये. This is all a lie. Try to understand the message. And if you try to go beyond the words, it can become part of your consciousness. So the anthology was given, and now we are going to get into the only scripture in the world which does not start with the language. The first one. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ. ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. It's starting with a number. It's not starting with the words at all. And there lies the secret. समझा गए, शुरू तो ही समझा देता है, सारा पेद इतने ही खत्म कर देता है. Now normally इसकी ट्रांसलेशन की कर देने जी, वो कह रहे हैं कि वो एक है. This is also true. Yes, वो एक है. But that's much more hidden in this. Much more hidden in this. The first signal in that is that what is going to be said here is beyond the language. Words cannot describe it. Hence, why use? Why bother? Whatever is going to be communicated to you is not communicable through the language. But I'm going to attempt. So what do? I'm going to use the language of dumbs and the mutes. I'm going to give you a symbol. Just as Om is not a letter of the alphabet. Did you know that? Om is not part of Sanskrit language. It's not part of the alphabet. And you cannot apply any matra to it. Kanna, Ankara, the Sari, Bihari. You cannot apply to it. You cannot form a word out of it. So why is that? He's pointing exactly to the same thing. This is sound. नाद ਨੂੰ point out ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है. एक symbol create कर देता है. I'm going to present this with a symbol because there is no way to pick any language, any word, and try to describe what I'm going to describe. That's the very first thing. That's the reason of using the number 1. The number 1 का यूज कर लिया, और कुछ क्यों नहीं. There's a beautiful story in Guru Nanak's life I'd like to share with you. That when he had gone to Makkah and he was in the mosque, and all of you have heard that story that the caretaker Qazi Jivan saw him with his feet toward the symbol. See, in Makkah there is no statue, there is just a symbol. And he was lying, and so he said, you are being rude, your feet are toward the house of God. And he basically said, wherever there is no God, just turn my feet around, I'm too tired, too old, blah 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 blah. And you know the story. That is a parable actually. Its meaning is totally different, but that's not the topic of it. Anyway, he was reported
to the Sufi saint of that time. So he got curious that if there is some saint of some caliber, let's find out. Islam believes in miracles just as Christianity does. Let's see what miracles can he do, and then maybe something we can learn from it. Or actually, it's a test more so than the. But he's curious. So now he's, Guru Nanak is there, and there are people gathered around, and he says, if you are what you say you are, or what Jivan tells me, the only way you are going to be Jadi Gustaki or the Gustaki ke saza to dono milegi. You have insulted and you're going to be punished. But you can be spared if you answer 3 questions. You say, well, that's impossible. I'm not going to answer under any gun. If you want to do what you want to do, go ahead. No question will be answered. But if you have a desire to know and understand, then we can have discourse. But if it's under the threat of life, then you can take it. I don't take it. So now here is a saint who is not afraid to lose the life, and etc. He's impressing that saint. I think his name was Sheikh Sadi. He's impressing him more and more and more. Anyway, he says, okay, now I want to know. Now the disciples are sitting around, and they were all sure that he is going to make him, one way or the other, absolutely speechless. So the first question, so he's sitting up there, he's standing, Guru Nanak is standing there, and people are surrounding in the podium, and he says, Khuda se pehle kaun tha? The first question, who was before the Creator? And Guru Nanak says, look, you just said that you want to learn, right? Yeah. But for learning, you need to offer something, don't you? So now he thought that lalchi santa hai kuch aap aise kaise karna chahta. So they went and said, bring some valuables, so some diamonds and some stones or whatever. So they brought them and they put it in front of him. So thali bhari, here's your dakshana. No. How many are there? Count. So they put it on the ground and they started counting. So Sheikh Sadi is counting and says 1, 2, 3, 4, and Guru Nanak stopped and said, wait a minute, you are not counting correctly. Now everybody is watching that. How can anybody make a mistake in counting to 4? So he starts counting again, and now he has only counted 2, and Guru Nanak stops him again. So you're not counting it right. So now he's getting exasperated and he's feeling very insulted and small because his disciples are watching him. So I'm going to count again. Now pay attention. As soon as he says 1, now Guru Nanak stops him again. He says, why do you keep on starting with 1? He says, where else to start? And you just got your answer. You got to start somewhere. एक से पहले तो कुछ था ही नहीं. That's exactly your answer. You just asked who was before the Creator. किसी जगह से शुरू करना ही. Somebody has to assume that there was a starting point. Just as you starting on 1 and saying there's nothing before 1, that's exactly what. The creation had to start somewhere. The Creator has to start somewhere. And this discussion between the creation and evolution, it's totally meaningless, right? One is assuming that there was a cosmic dust, right? Isn't that their basic assumption? Cosmic dust revolving and then cooling and expanding, etc. And then, right? Well, their assumption is a cosmic dust. Why can't my assumption be a cosmic force? It's an assumption. It has to start somewhere. So I don't understand what the argument is. They are saying that there is a evolutionary scientist says there was a cosmic dust and that gelled into the universe and is expanding. And I'm saying there was a creator who is creating. And the second question, he basically said, where does he live? If there was nobody before him and he's the only one, he's the first one, so then he must have a very choice residence, right? Those who came to California first, they have picked the most choice
hillsides as well as the seas and मेरे वर्गे रोड थे चौंकड़ी भी को पाउंड मिला. Yeah. If he was the first one, he must have a prime residence. So where does he live? This is, look, I've been standing here, you've been sitting up there, I am talking, and you are not even offering to the same something to eat, something to drink. What kind of hospitality? I thought the Islam was known for its hospitality. So he asked his disciples to go get some milk. So they brought the milk. So he offered to Guru Nanak and said, well, if you are going to give me milk, at least give me the pure milk. Look in there. So he looks at the glass, there's nothing in the glass. So he says, pure, fresh. What's your problem? He says, no, it's not pure. What is in it? Guru Nanak says, इसमें मक्खन नजर नहीं आता. इसमें अभी बटर है. ये प्योर मिल्क कैसे हो गया? तो बटर तो फिर वो बटर कैसे नजर आ गया? Exactly. To see the butter in the milk, to get the butter out of the milk, you need the eyes and the technique. दूध को जमाना पड़ता है, दही बनता है, दही को मथना पड़ता है, मथने से बटर बाहर निकलता है. वो एक तरकीब है उसको निकालने की, और उसमें है सही है, सिर्फ नजर ही नहीं आता. You don't have the eyes to see it, neither you have the technique to get it out. Similarly, the Creator is in the creation. You just don't have the eye to see it and to find it. He's not anywhere else. He's not separate. He's not the kind of creator कि क्रिएशन किसी के घर में बैठी है, बुतकार ने बुत बना दिया, बुत कोई ले गया और बुतकार कहीं चला गया. तस्वीर किसी ने बना दी, वो यहां लटकी पड़ी है और तस्वीर बनाने वाला अपने घर में बैठा है. That type of creator is not that creator. वो क्रिएटर क्रिएशन में ही है, और उसको देखने के लिए, निकालने के लिए आंखें चाहिए, तरकीब चाहिए, युक्ति चाहिए, तो तेरे पास है. इसलिए तू सवाल करता है. अदरवाइज देयर वुड हैव बीन नो क्वेश्चन. एंड नाउ द लास्ट वन. वो करता क्या है? एंड बनारस से वेट अ हद होगी गुस्ताखी की. सवाल देने वाला ऊपर बैठा है, जवाब देने वाला नीचे खड़ा है. अब तो तेरे को कुछ बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये गुस्ताखी की हद नहीं है. यू आर थोड़ी राइट. आई एम बीइंग वेरी रूड. आई रियली वांट टू नो द आंसर. कहते फिर वो शागिर्द की तरह सीख. उस्ताद बन के बैठा ऊपर, वो नीचे आ गया. कहने लगे गुरु, कहने आप ऊपर बैठिए. गुरु जी ऊपर बैठ गए. कहने लगे बताइए वो क्या करता है? वो कहने की यही तो करता है, जो ऊपर होते हैं उनको नीचे ले आता है, जो नीचे होते हैं उनको ऊपर कर देता है. यही तो उसका खेल है. अभी बात समझ नहीं आई. थोड़ी देर पहले तुम ऊपर थे, नहीं आता. अभी तुम यहां हो, मैं ऊपर हो गया. एक ऐसे पहले कुछ भी नहीं था. जहां से मेरे को ये गाथा याद आए, तो गुरु नानक ने इशारा किया है कि यहां और व्हाट नंबर शुड आई यूज, बिकॉज व्हेन ही इज, उसके बारे में उसको अगर बयान भी करना हो, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन हिम, दैट मीन्स यू हैव टू बी ए विटनेस. व्हेन ही इज, हम अपने बच्चे की कहानी बता सकते हैं. क्यों? व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, आई वाज देयर, सो नाउ आई कैन टेल अबाउट इट. आई एम ए विटनेस टू द बर्थ. अब उसके बारे में क्या बताऊं जब मैं खुद वहां को विटनेस चाहिए, फिर कुछ दूसरा होना चाहिए. तो सवाल तो वैसे का वैसा बना रहा कि वो दूसरा कहां से आया, फिर वो रिडल सॉल्व नहीं होती. एंड गुरु नानक सॉल्व इट ब्यूटीफुली. देयर वाज नोबडी एल्स. नथिंग एल्स कैन बी पुट, नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन इट, नथिंग एल्स कैन सिग्निफाई इट, पॉइंट इट आउट टू अस that one, except the number one. This is the only scripture in the world that gives these many secret meanings. Now comes the next word, Om. Now those of you who have seen Om, today you are going to see some secrets. जो Om
की धुनी है, इसकी क्या शेप है? वो है ऐसा, और ऐसे लाइन चल जाती है। अगर मैं अपने सर से उंगली नीचे लाऊं और फिर यहां ले जाऊं, ये क्या बन गया? फिर देखो, यहां से शुरू करूं, यहां तक लाऊं, फिर नीचे ले जाऊं, फिर यहां ले जाऊं, ये क्या बन गया? और अगर इस तरह से लेने से इसको ऊपर लेके तो ये इशारा कर दूं तो ये क्या बन गया? ये ओंकार बन गया। ये है गुरु गोविंद सिंह का खालसा मेरो रूप है खालसा। जो इन्होंने बनाया वो नहीं है। ये है क्या? द शेप, द रिकॉग्निशन ऑफ द क्रिएटर। क्रिएटर इज धुन रूप, साउंड, साउंडलेस रूप, अनहद। उसकी फिजिकल फॉर्म कैसे बनाया वो? Christianity says the God made the man in his own image. Now that doesn't exclude woman, by the way. It is his image. But what is his image? Sound. उसको कैसे represent करूं? Yes. नानक ने इसको, ये दसम द्वार है, समझो? यहां से ऊपर जो, तो इसको ये जो सिंबल, ये ऐसे नहीं है कि वो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऊपर ऐसे कर दिया है। ये कैलोग्राफी नहीं है। इट इज नॉट ग्राफिक डिजाइनर राइटिंग ए सिंबल, इट इज द विजुअलाइजेशन, इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द इनर सोल। वो कोई लंबी दाढ़ी वाला नजर नहीं आता वहां पे बैठा हुआ चोला लेके और हाथ में डंडा लेके। वो धुन रूप है, वो प्रगट होता है इस हृदय में। वो साउंड आती है, वो आवाज साउंडलेस साउंड आती है। वो है गुण गोविंद गायो नहीं जन्मकारत की। वो जो अंदर धुनी उठती है, वो जो धुन रूप है, वो जो परम शक्ति है, साउंडलेस साउंड है, उसका जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंसान के चेहरे में है। इसको कहा है खालसा मेरो रूप है खालसा। खालसा कौन है? नबीदारी वाला नहीं। कहो कबीर जन भय खाल से प्रेम भगत जेह जानी। खालसा रूप, खालसा अक्षर बानी से आया है। कहो कबीर जन भय खाल से, कौन? प्रेम भगत जेह जानी। जो प्रेमा भक्ति का ज्ञाता हो गया है वो खालस रूप है, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। तो एक कह के वो कैसा लगता है उसका सिंबल नेक्स्ट रख दिया। जब वो बात गुरु गोविंद सिंह की ये कहते हैं खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हाउ करो निवास। उसके दो रूप हैं, हाउ मैं। इंसान को बनने के लिए उसको ईगो दे दिया, साथ आइडेंटिफाई कर दिया, मैं हूं। ये ट्रांसलेशन करते हैं कि जेड़ा मेरे जी लंबी दाढ़ी है तो पगड़ी लगी है खाजे दे वो है तो मैं, मतलब मैं कहते गुरु गोविंद सिंह कह रहा है मैं वो वसा पे ਅਸੀਂ अपनी जड़ा च तेल ऐसा खूबसूरती ना रहता है कि हुण निकले नहीं जाना। जगाए नहीं जा सकता। सुत्ते नूं ते जगाओ, जागदे नूं कौन जगाए? जेड़ा घेरदा ही होता है। He is one and he is dhunru। साउंड है कौन सी? कहते अनहद, ओंकार की साउंड है जो कि अंदर से आती है। That is not something that you can hear from outside. It's not the subject of these ears. This ear and these words is an electromechanical process. Sound energy striking against the drum
creating the pulses creating the electromagnetic signals sending to the brain, and the language that we have learned then gets interpreted. That's not that sound he's talking about. वो साउंड जब आती है जहाँ तो वो सुनने वाला रहता ही नहीं, वो ध्वनि all the time around. We don't have that instrument. We are not human. हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और ही है, उस ध्वनि को सुनने का हमारा रिसीवर वाई, that sound is there all the time for everyone. ये जितना योग शास्त्र पैदा हुआ उसका सीक्रेट ये है कि बॉडी को ट्यून कैसे किया जाए. किसी ने भूख से ट्यून करने की कोशिश की, किसी ने नहाने से ट्यून करने की कोशिश की, किसी ने जाग के रहने की कोशिश करी, किसी ने शरीर को दुख देने की, कि किसी तरह से ये बॉडी इतनी ट्यून हो जाए कि वो साउंड जो है अंदर से वो सुनाई दे. इतनी आसान बात नहीं है. As we go deeper into it, we'll find the process and the methodologies right from within there. Jap will tell us how to get there. To keep in mind that this has been experimented, it has been proven. अगर आपको कोई यकीन नहीं है तो ठीक है, पता नहीं इससे दिमाग की खुजली है इंटेलेक्चुअल. हाँ जी बड़ी आज बात बड़ी सी कही आपने, ठीक है पास करके अच्छा आप भी घर को गए, हम भी घर को गए, खाली आए थे खाली. If you really believe and trust and can see through this, that this was something not too far ago, not more than 400 or 500 years ago, this was actually done and proven and presented in the life form to the mankind. Not once, not twice, over the period. That should give you enough of the motivation and incentive that I can do it too, provided I want to do it, provided I have a desire to do it. जिसको फेथ कहते हैं वो यहीं से पैदा होता है. जिसको फेथ नहीं है वो थोड़ी देर करता कहता है ऐसा वो भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, नौकर कह रहा है क्या कैसे खाओ, ये सब अपने बस का रोग नहीं, ये सब टुन होता है. ई का रख के उसके साथ क्या रखा उसका सिंबल. इमीडिएट क्वेश्चन विल बी दैट व्हाट इज इट. यू सेड इट इज वन. And that's a unique thing. You are not using the word. You gave me a number. Okay, I got it. But then what? What do I do with it? You understand that? इसी में ही सारा सीक्रेट जो है भर जाता है एक ही में. अगर आप इसी बात के ऊपर मेडिटेट कर, I shared with you the revolution that came in my life was because of this one. जिस महापुरुष के पास मैं बैठा था और किसी और ने सवाल किया था ये. Somebody said to somebody, and I was just sitting, just like this. And Santji, I do the part, but my mind runs away. What should I do? And he says, well, part कहाँ से शुरू करते हो? So he started taking God, Satnam, slow down. जरा धीरे कहो. फिर कहा एक है तो भाई क्या एक चीज समझ आ गई, एक याद हो गया. He was totally stunned. What he's saying? But do you understand one? If you don't understand one, what is the use of saying Omkar? Just stay with one. उसके पल्ले कुछ पढ़ा नहीं पड़ा अपनी जीवन में गुजर गए, फिर जीवन तब्दील हो गया. ये तो बात है. वो चलाया तीर किसी तरफ था, वो हमारे हृदय में लगे. एक ही समझ नहीं आई अभी तक, तो और कहाँ क्या जाना है. अगर एक ही समझ आ जाए तो हिंदू भी चला गया, मुसलमान भी चला गया, सिख भी चला गया, ईसाई भी चला गया, तो एक ही तो रह जाएगा सब. जानवर भी गए, पंछी भी गए, वृक्ष भी गए, सारे गए, एक ही तो रह जाएगा. अगर एक ही समझ में नहीं आया तो आगे जाने की क्या जरूरत है. आपने वो धर्मपुत्र युधिष्ठिर की गाथा सुनी है ना, कि जब सबसे पहले उसको स्कूल में लेके गए थे तो पहले दिन तख्ती पे लिख दिया क्रोध मत करो. नो, सदा सच बोलो. पहले सदा सच बोलो, ठीक है, याद कर लिया, सदा सच बोलो, सदा सच बोलो. नेक्स्ट जो उसने लिख दिया क्रोध मत करो.
वो आके युधिष्ठिर रिपीट किया जाता है, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। थर्ड डे टीचर ने जब पूछा सब जमात से, सबक याद हो गया, तो युधिष्ठिर वाज द ओनली वन सर मेरे को याद नहीं हुआ, आई डोंट नो। तो कहा था सच बोलो, कभी ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ? कहता जी आपने कहा था सच बोलो, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को दूसरा सबक याद नहीं हुआ। तो अच्छा चलो क्लास के पीछे तुम उसको याद करो, दूसरी बाकी की क्लास आगे चलती है। तो टीचर स्टार्ट टीचिंग देयर सबक। द फॉलोइंग डे द सेम क्वेश्चन टू Yudhishthira and he says no. Few days are gone by and this teacher is getting very much worried that this guy is the eldest son of the king and he's stuck on the second lesson, and if the king finds out, I'm in big trouble. तो वो इससे पहले कि उसको कोई और जाके बता दे तो मैं पहले ही चला जाता हूँ, वो उसको लेके खुद ही चला गया, जाके उसके बाप के सामने झुका। धृतराज होगा ये आपका बड़ा लड़का जो है ये, बाकी सब जमात चली गई, मैं कितने सबको और पढ़ा चुका हूँ, ये सेकंड लेसन पे रुका है। तो बाप ने, राजे ने पूछा बेटे क्या बात है? जी पिताजी पहला सबक सच बोलो तो याद है, पर मैंने दूसरा सबक दिया क्रोध मत करो, वो याद नहीं हो। अभी इसमें कौन सी मुश्किल बात है? काट चपेट गाल पे आई, आंसू गिरे दोनों, खून की तरह गाल लाल हो गया, तो कहने लगा सब याद हो गया। Now I remember. And everybody is stunned, including the father. He said, how come a slap? I said, no, that's not the point. क्रोध करने का मौका नहीं आया, कैसे पता चले कि याद हो गया कि नहीं हो गया? आज आपने बिना कसूर, हालांकि मेरा कसूर नहीं है, सजा मिली है, बिना कसूर के सजा मिले तो क्रोध आना चाहिए, मगर मैं देख रहा हूं क्रोध नहीं आया। नाउ आई कैन सी क्रोध अंदर नहीं है। अब मैं तीसरा सबक से जाने के लिए तैयार हूं। याद हो गया? रट लेने से क्या होता है? द इंटायर सिख जगत इज डूइंग दैट, रटना। जबानी याद है, सुबह से लेकर जपजी पढ़ रहे हैं, रात को रहराज पढ़ रहे हैं, सारा जबानी याद है, आगे से लेके पीछे, और एक एक पता नहीं। क्यों पता नहीं है? जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं, हिंदू भी बुरा है, मुसलमान भी बुरा है, ईसाई भी बुरा है, बौद्धि भी बुरा है, जैनी भी बुरा है, सब सिख अच्छे। तो एका कैसे याद हुआ? अगर एका याद हो जाए तो वो एका ही तो है सब जगह पे, तो बुरा कैसे होगा कोई? इट इज टोटली कंट्राडिक्टरी, हाउ कैन इट बी? अगर एका याद हो जाए तो कहां जाओगे आगे? तो उस फकीर ने, ये आज से 28 साल पुरानी बात है, न्यूयॉर्क में बैठा था, तो उस फकीर ने उस नौजवान को कहा, बेटे तू ओंकार क्यों कहता जब तक एका याद नहीं हुआ? वो तो हंस के चला गया और अपनी जान बदल गई। उस दिन से मैं इस तरफ लग गया कि ये एक एक को देखना है, एक एक को समझना क्या है, अदरवाइज आई हैड नो क्लू व्हाट दिस ऑल अबाउट। एंड गुरु नानक ने एका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया है, दुनिया को कोई ग्रंथ नहीं है। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस एंड यू कैन टेक दिस मैसेज टुडे, देयर इज नॉट ए सिंगल स्क्रिप्चर यू कैन फाइंड आउट व्हिच स्टार्ट्स विद अ नंबर अदर देन गुरु ग्रंथ साहिब, एंड देयर इज सच ए बिग सीक्रेट इन इट। भाषा के बाहर है, और जो भी है वो एक है, एक ही धागा है, सब माला के मनते हैं, धागा एक ही है सब। And then the next question which comes up, immediately question comes up, तो उसकी पहचान क्या है? साउंड है, ओम है, ओंकार की धुन है, वो धुन रूप है। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लाख दरियाओ, अगे जब भी जाएगा। की मतलब कीता पसाओ, पसारा, फ्रॉम एक द एक्सपेंशन का जनाब, एको कवाओ, कवाओ का मतलब कूना, बोलना, विद वन वर्ड। इस्लाम इसको कहता है, खुदा ने कहा कुन, कुन का मतलब है हो जा, दैट्स व्हाट ट्रांसलेट कुन फारसी में मतलब हो जा। दैट्स हाउ इस्लाम एक्सप्लेन्ड इट।
अल्लाह ताला पहले था, तो उसने फिर कहा कुन, और ये सारी कायनात आ गई। कुन कहने से हो जा, एक से अनेक हो गया। वन became many by just one word, sound. Now, isn't this interesting that even science agrees with it today, that sound is the primal energy? Every matter has its own sound, isn't it? Have you ever thought that when someone you know just may be walking through the door and the door is still closed, उसने आवाज नहीं दी, घंटी नहीं बजाई, आपको पता चल जाता कौन आ रहा है? कैसे हुआ? पाँव की चलेगी, आप आवाज से पता चल, पदचाप से पता चल जाता है कौन आ रहा है। Every matter in this world has a unique sound. इसकी साउंड इससे नहीं मिलती। इसको पापा नाने कहता है विस्माद नाद, विस्माद भेद, विस्माद में चला जाता हूँ कि ये इतनी साउंड जो है, अंदाज जो है, कैसे कैसे भर दिया है। कोयल की कूकू जो है वो कां के कां से नहीं मिलती, हर एक की आवाज यूनिक है। तो कौन बोलता है ये आवाज कहां से आ रही है? तो कह रहे ये कौन बोल रहा है, ये आवाज किसकी है? इसकी है? नहीं, अरे सबेगा ड्राम बोले, ये साउंड वहीं से किसी बैठी है, ये साउंड भी उसी से, वो धुन रूप है। तो सबसे पहले जो संबंध बनता है दुनिया में, सबसे पहला संबंध कहां से बनता है? जब बच्चा इस धरती पे आता तो क्या करता है? सबसे पहले उसको क्या आवाज दे, भाई तो सीधा है रिलेशन। वो श्वास को अंदर खींचता है, आवाज को बाहर फेंकता है, संबंध बन गया, रिलेशन बन गया। कायनात अंदर से बाहर की डायमेंशन से अब रिश्ता बन जाएगा कि साउंड, वो धुन रूप है। तो हवा के पत्तों में से हवा का चलना और पानी के कलकल में भी वही है, पंछियों की आवाज में भी वही है, झीलों में भी वही है, इंसान में भी वही है, जानवर में भी वही है, शैतान में भी वही है, हवान में भी वही है। आवाज वही है, वो साउंड है, एक ही है, किसी की एक की ही साउंड है। वो धुन रूप है मगर एक का ही है, धुन किसी बात की नहीं, अलग अलग नहीं है। बुद्ध और हिटलर दोनों इकट्ठे बैठे हैं, आवाज उसी की, इसीलिए वो खास रूप है, ये आम बात नहीं है। And you're not going to find these things in the books. कि उसने ये बनाया जो, अच्छा देखो, अगर किसी की गर्दन उतार के अलग रख दी जाए, the only thing you probably can say whether it's male or female, that's about it. Nothing else can be recognized. मगर नीचे का पोर्शन कहीं हो, सिर्फ चेहरा हो, तो सारी पहचान आ जाए। Everything about that being now can be documented as soon as you see the face. So I'm giving you the as to what Guru Gobind Singh Ji meant. वो परमात्मा की बात कर रहे थे, खालसा मेरो रूप है खास। इस चेहरे से पहचान होती है किसकी? परमात्मा की, खालसे की नहीं। जिसके चेहरे के ऊपर लंबी दाढ़ी और सर के ऊपर लंबे बाल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा का रूप अभी नहीं रहा। उसकी पहचान, परमात्मा की पहचान अभी भी है, चेहरे से है, वही रूप है उसका, वही सिंबल है उसका। और इसको इन्फिनिट कर दिया। क्रिएशन आ रही है, आती रहे। साइंस आज कहती है द क्रिएशन इज एक्सपैंडिंग, continuously expanding, and someday it will collapse into itself.
और गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा, जब उद कर करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा, जब आकर्ष करता हो कब हूं तुम्हें मिलत भेद हर सब। क्या? जब उद करख करा करतारा, when you have the desire to be into multitude, प्रजा तरत तब दे अपारा, from one you to became many, you created all of this. And then जब आकर्ष, आकर्षण, to pull back, जब आकर्ष करता हो कब हूं, whenever this comes to you, that is enough is enough, तुम्हें मिलत भेद हर सब हो, they will all come back and get back into you as one. इसको आज साइंस क्या कहती है, it's expanding, 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 and its limit will reach when it will collapse back into itself. So spiritual scientists and a physical scientist coming from totally different directions, reaching exactly the same conclusion, whether they realize it or not. Mystical scientist has reached this conclusion much as before the physical scientist, but it's all documented. And Guru Nanak says, it is Om, it is sound, everything is sound. It comes from the sound, it goes back into sound. क्यों? संबंध साउंड से बनता है। आप और मैं यहां पे 3 घंटे चुप बैठे रहे तो क्या बात बनेगी? Would we know about anything? Would we create any relation? Not only that, now here is a beautiful thing about this. आप रशियन बोलते हो और मैं पंजाबी बोलता हूं तो क्या बनेगा? This is exactly what is happening between us and God. वो सच की भाषा बोल समझता है, हम झूठ की भाषा जानते हैं, हमारा हिस्सा नहीं बन पाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये बानी कह रही है। क्या? उथे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास, उथे सच, सच की बाणी नानक आखे, सच बुलाए सी सच की बेला। His languages of the purest form of truth. For the last couple of weeks, this has been a constantly asked question of me. अब यार बहुत impractical बातें करते हो, हम दुनिया में रहने वाले हैं, जैसे अभी इसको जमीन पे लाओ, है ना? We've been discussing this, right? कि आज तक कोई ऐसा, we have not seen this kind of things before. हमने ऐसा प्यार नहीं देखा, हमने ऐसी भक्ति नहीं देखी. No, we live in this world, so we want to talk about this world. I respectfully submit to you that if you need that, you need to attend some mandir, some masjid, some gurdwara, some granny, some lecturer, read some books. It's all documented there. Then we don't need a forum like this. The purpose of the forum like this is get this noise level and let's look at that dimension where they really was meant to be. That's why I do not compromise on that topic. I say, no, wait a minute. If we are not even willing to listen, if we are not willing to understand, what chance we have to get there? I understand I am not there. I accept that. I understand I live here. And I am absolutely victim of all the follies that any person can have on this planet. But at least make an attempt. कि भाई वो मंजिल तो कहीं और है, हम यहीं भी ठिकाना बना के बैठे हैं. These are mystical things. If we are not willing to listen and talk and discuss, and we constantly want to say, कभी आप धंधे की बात करो, कुछ इसमें तो कुछ नहीं बनेगा, ये कोई बैंक को थोड़ी ले जाया जा सकता है. जो प्रैक्टिकल प्यार है वो गल का ऑक्सीमोरन है, प्रैक्टिकल तो प्यार दोनों इकट्ठे होंगे ही. It has nothing to do with the love. If it is a practical thing you want to talk about, तो मोह की बात कर लो, लस्ट की बात कर लो, अट्रैक्शन की बात कर लो, अटैचमेंट की बात कर लो, प्यार की बात मत करो, बिकॉज प्यार और प्रैक्टिकल दोनों इकट्ठे नहीं होते. प्यार को फिर प्यार की जगह पे रहने दो. Love is God and God is love. Leave it alone there. Don't claim to be in love when you want to be practical. मैंने आज बेड बनाया, तू जाके नीचे चाय बना, ये प्यार की बात नहीं है.
ये पार्टनरशिप है, ये लेन देन है। गुरु नानक ने सिख के लिए जो मार्ग बनाया, उसके लिए जो सिंबल लिखा है, उसने ओंकार का सिंबल दिया है। कहते ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यू कैन गेट बैक देयर थ्रू लव एंड वी विल सी एज वी गो हाउ वो प्रेमा, भक्ति और ज्ञान हमारे को इकट्ठा करते हैं। Sikhism in the modern world was the first religion, spiritual school that combined Dhyan Marg and the Bhakti Marg. If you read Farid, and we went through his shlokas, it's pure Bhakti Marg. वो बड़ी लॉजिकल बातें वो परवाह ही नहीं करता, सब कुछ एक्सप्लेन करने की छोड़ देता है। And that created a confusion in the so-called scholars in the Sikhs के वो जी फरीद ने ये बात कही पर वो गलत थी, तो उसको ठीक कर दिया गुरु नानक ने। क्या पागल काम, एक ब्रह्म ज्ञानी दूसरे ब्रह्म ज्ञानी को गलत कह जाए, वो ब्रह्म ज्ञानी रहेगा क्या? और अगर वो बात गलत ही है तो व्हाई टू इंक्लूड इट? छोड़ दो, पहले किसी की बात को फिर उसको सही करो। ये कितने अहंकार की बात हो गई। पर वो अहंकार गुरु नानक का नहीं है, वो अहंकार उसके सिखों का है। वो कहते हैं कि हमारे गुरु ने फरीद को ठीक कर दिया, उनकी छाती ऐसी फैल रही है क्योंकि हमारा गुरु बहुत प्यारा है, वो फरीद तो ठीक नहीं था। ऐसा पागल है। दोनों ब्रह्म ज्ञानी है। बात यह है कि फरीद ने इसकी परवाह नहीं की, that logically is somebody understanding it or not. He is a pure प्रेमा भक्ति, और प्रेम भक्ति से जो अंदर से आया वो वैसे का वैसे वो लिख दिया, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। पर गुरु नानक took that and build on it and explain it so that people will not get confused. It's expansion of the thought, not the criticism of the thought. अगर criticism हो गया तो एक तो नजर ही नहीं आया, फिर एक तो गया, फिर तो दो हो गए ना, एक गलत कहने वाला एक सही कहने वाला, फिर तो दो बन गए। तो जो फाउंडेशन है सिखिज्म का वो एक है। And the reason we are so disintegrated today is because that's the very foundation which we don't have. हमने फाउंडेशन ही तोड़ कर दिया, एक एक को छोड़ ही दिया, समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये तो आदि गुरु से आया है। आज की संगत में मैं आपको सिर्फ ये मैसेज छोड़ के आपको घर ले जाने के लिए छोड़ना चाहता हूँ कि सिखिज्म ने एक, और कौन है एक, वो जो धुन रूप है, जिसकी कुछ फॉर्म शेप नेम कुछ नहीं है, धुन रूप है जो सब में गूंजता है, उसकी तरफ इशारा किया है। As we go, we will look at word by word, and with each other's cooperation and blessing and grace, we'll see how we can peel off various layers and see what other messages come through to him. So with that we will conclude today's talk. Thanks for coming. If there's any questions and discussions you want to take, we can take up. Because I want after none. Okay. And the notice at the same time that the other documented नहीं है। So the question that I had was it really something simpler, easier to attain that level? I mean, why is there? I can only offer you a hypothesis, because each one of the religions prior to Guru Nanak was life denying. Life denying. Denial. You had to either do this or that. जंगल को जाओ, भक्ति करो, छोड़ दो दुनिया को,
it didn't seem possible or practical to lead the normal day-to-day life and follow the spirituality as well. This was the first experiment, as a matter of fact. When he did eventually meet the yogis and of that time, गोरख के का बहुत हिंदुस्तान में उस समय जोर था, योगी सिद्ध ये जो थे, and that was their very first objection, that how could you have ever mixed this? ये तो जैसे दूध में कोई कांजी डाल दे ऐसे, that's the simile they use, that these things are not compatible. And the response was that the evolution of the mind and the body has reached a stage from the cave age to the today's age that running away is not practical anymore. And it is possible to achieve this while following the life of within the society. And so he created a system which says, how can you be, in the true sense, as Gita says, to karma yogi hoga. These two words are contradictory words. Karma and yoga. कर्म तो तोड़ता है, योग जोड़ता है. अब ये दोनों बातें इकट्ठी कैसे हो जाए? कर्म ने बाहर की तरफ लेके जाना है, योग ने अंदर की तरफ लेके आना है, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना. तो गुरु नानक ने कहा, हाँ, कर्म योगी हुआ जा सकता है. यही कृष्ण कह रहे हैं जो अर्जुन को, तो कर्म योगी हो जा. मीनिंग व्हाट? यू आर नॉट द डूअर. अगर तेरे से डूअर की भावना चली जाए तो उसका जो रिजल्ट है उसकी भी जिम्मेवारी तेरी नहीं है. अगर तू करता ही नहीं है, इफ यू आर नॉट द करता, नॉट द डूअर, देन उसका जो रिजल्ट होगा वो भी तेरा कैसा हो सकता है? अगर तू डूअर की जिम्मेवारी ले ले कि मैं कर रहा हूं, तो जो एंड रिजल्ट है वो भी तेरा ही है. उस भावना से कर्म करने का जो अभ्यास है, टू स्टे इन द वर्ल्ड एंड एक्ट एज इफ सब कुछ हो रहा है तेरे थ्रू, तू कर नहीं रहा. अगर ये याद रह जाए विद एवरी एक्शन दैट इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, somebody else is doing it through me, if this awareness keeps on deepening in you, more deeper it goes, closer to the ultimate creator you will be. And hence that method then was experimented upon. नहीं तो सब ने कहा, जैन क्या, बुद्धिज्म क्या, हिंदुइज्म क्या, मोहम्मद क्या, जीव्स का, सबका ये बाहर जाके जंगलों में बैठ के तो अभ्यास करने का, योगा करने का सबका था. नानक का मार्ग जो है वो गृहस्थ में रहकर इस भावना को गहरा करना है कि कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं मर जाए, जैसे ये भावना दीप पर जलती जाए. इसीलिए ये गीत संगीत का साथ मेल किया था. सुर जो है जब शब्द के साथ मिल जाए तो आई, जब हम गीत गाते हैं म्यूजिक में, जब बैठते हैं तो उसमें अगर खो जाए तो अपना एहसास भी खत्म हो जाता है, वक्त का पता नहीं चलता कैसे हो जाएगा ना, आई की भावना मर जाती है. इसलिए वो एक टेक्निक है. So the answer to your question is yes, it was easier for the consciousness of this time and is applicable today. Yeah. And also in the reverse form, criticism yeah, the practical to attain the level. Reverse is not true. इस हाइपोथेसिस का रिवर्स ट्रू नहीं है जो आपने कहा ना. क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि उस समय की कॉन्शियसनेस को वो टूल चाहिए था. इस समय की कॉन्शियसनेस, because the people achieved through that matter also, right? They were not totally impotent. Jesus created 12 disciples, right? And that's where it stopped. फिर चर्च बन गया, तो फिर वो ऑर्गेनाइज बन गया, और उसके जमाने में उसने अपने डिसाइपल्स को वहां तक लाने की कोशिश की. अगर वो नहीं आ पाए तो वो उनके पर दे हैड द मेथड. अगर आप if you study these, Jesus belonged to a secret
mystical group called Essenes, ESSENES, Essenes. वो कुछ सोसाइटी है, वो सिर्फ इस मेथड को में ट्रेन करती है जो कि जीसस ने अप्लाई किया। तो वो मेथड सब ठीक है। योगा से पतंजलि ने योगा लिया तो योगा से लोग कामयाब हो गए, बट दैट्स नॉट एप्लीकेबल इन द कॉन्शियसनेस दैट इज नाउ इवॉल्विंग। और अगर आप रजनीश को पढ़ो तो आपको ये कह देगा कि आज और भी उसने इसीलिए वो डायनामिक मेडिटेशन निकाली ना, 15 मिनट ये करो, 15 मिनट ये करो, 15 मिनट ये करो। What he's trying to say is that time and space is moving at even a faster rate than it was moving when Kabir was. Hence, the methods need to be changed even further. So Nanak synthesized, looking at the pitfalls of the others, and then they said, wait a minute, here is a method, and that method and that process then was replicated. Not just Kabir eko ho gaya. And it's not a condemnation or rejection or negation of the others. They did not achieve the Christ holder. As the Mahal under the yes. Yes. Exactly. No. And who knows who will come? Yeah. See, and that's where Islam takes, totally side track. It says, they say that with Muhammad, end up everything. That's it. He is the last Messiah, last पैगंबर. उसके बाद ना को आएगा, हो ही नहीं सकता, वो दीवार ही बंद कर दिया खुदा ने. And they don't allow it. You cannot discuss any other पैगंबर after Muhammad. वो इस्लाम की तौहीन हो जाएगी, वो आपसे साथ मरने के लिए तैयार हो जाएंगे. They are so strong about this belief that Muhammad, after the Muhammad, Allah Ta'ala absolutely stopped the flow of पैगंबर. वो और अवतारा नहीं आ सकते. No, that's not what we said. That's not what we said. What he said, there is no more need in Guriyai in physical form. पर इसको पाके, इसको पढ़ के आप अचीव कर जाओ, ठीक है, अब गुरु नहीं बने, आपने अचीव कर दिया. Nothing is stopping you from achieving that state. Whereas they won't accept. वो फकीर हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, पर वो नहीं. Yeah. We are taught to go beyond. When the word understanding पढ़ बूझे कहा है, all it is implying is that if you know कि आप बैठे राम 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 कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं. If you have that inside you, and it is not a blind leading a blind or blind following a blind, then you have an understanding and stay with that thought. Eventually, as धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा, जबान से छूट जाएगा, अंदर चला जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ ही ड्रॉप होगा. Everything eventually, because the state which we are basically alluding to, वहां तो कुछ भी नहीं. As Buddhism says, somebody asked Buddha, can you explain to me कि ये जो आप मार्ग बता रहे हैं ये क्या है. तो वो अनियन पड़ा था, क्या उसको ऐसे लेर उतारने लगा, कहने लगा जैसे लाइक पीलिंग द अनियन. अब वहां पे बड़ी मुश्किल आ गई ना, सवाल बड़ा गड़बड़ी हो गई. अब यहां तक तो ठीक था कि ये बहुत बारीक लेयर है, ये बहुत मोटी लेयर है, ये छोटी है, ये यहां से बंद हो गई है, यहां से खुल गई, यहां तक तो ठीक रहा. अब वो डिसाइपल ने पूछ लिया कि जब सारे चले जाएं तो फिर क्या बचा. You know what his answer was? जो बचा है उसी की तलाश है.
अच्छा, वो इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है ये इसमें, मतलब इट्स नॉट ए स्मार्ट आंसर टू व्हाट यू आर सेइंग। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको बैठ के आप किसी गुरु के पास गए तो उसने आपको माला दे दी, मंत्र दे दिया, माला फेंक दी। आपसे किसी ने पूछा ये माला क्यों कर रहे हैं, आपने कहा जी फलां गुरु ने दी थी, तो बात खत्म हो गई। तो वो समझ नहीं है, वो क्रियाकर्म बन गया, वो रिचुअलिज्म बन गया। और अगर आपको किसी ने मूर्ति दे दी है और वो मूर्ति एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है वो अल्टीमेट की उसके थ्रू देखने की, तो वो मूर्ति मुबारक है, वो समझ है। That's the understanding what is being taught, that it's not the intellectual issue. The issue is that what you are doing or not doing, are you doing with the full awareness and understanding or not? जिस इंसान की पगड़ी को बनी है, मेरे प्यो ने बनी तो मैं बनी है, कोई जवाब है? ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जो गुरबाणी की अंडरस्टैंडिंग होगी ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਰਾਈਡਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। वसंत जी, जो फैनेटिसिज्म है ना, फैनेटिसिज्म का संबंध है बिलीफ सिस्टम से, नॉट इन व्हाट यू बिलीव। एनीबॉडी हु इज ए बिलीवर इन एनीथिंग विद exclusion of everything else will become a fanatic. Of course there are. It's not exclusionary. There are. The reason that they are, देखिए ना, अगर इतने ब्रांचेस बन गए यहां तक कि 33 करोड़ देवी देवताओं को मान लिया गया, तो क्या जरूरत है इतने लोगों की भाई? Actually that points out कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो अपना छोटा सा ये बना के अपने घर में रख लिया, मैं तेरी इतनी आबादी नहीं है दुनिया की जितनी के उन्होंने देवी देवते बना लिए। किस लिए? नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग फैनेटिक बिलीफ सिस्टम, एब्सोल्युटली रिजिड। कि तेरा भगवान और मेरा भगवान भाई एक ही भगवान है, छोड़ दे, कोई और जरूरत नहीं करता। नहीं ऐसी तैसी, मेरा भगवान तेरे से लगा, तू नहीं मानता, तू एक हाथ वाली रख ले, मैं 2 हाथ वाली बनाता हूँ। दूसरा कहता मेरे को तो 5 चाहिए, किसी ने 8 बना लिए, किसी ने एक और आगे वो कहते हैं हमें मेल एनर्जी चाहिए, नहीं हमने फीमेल, उन्होंने 7 देवियां बना ली। तो ये क्या पॉइंट आउट करता है कि इतना फैनेटिसिज्म है, इतना फर्म मॉडल है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये अलग बात है कि उन्होंने इस्लाम की तरह तलवार निकाल के गला निकाला, ये निकाह कि तू नहीं मानता तो मैं तेरा गला ही काट देता हूं। उसने ये जरूर कहा तो अपने घर में चला जा, मैंने अपने घर में मंदिर अपना बना लिया, मैं तेरे साथ बैठने के लिए पूजा करके तैयार नहीं। तो इसलिए डिवीजन हिंदुस्तान में इतनी हो गई कि बेसिक कॉन्सेप्ट खो गया। I know you were not done. Many times whether it is in Japuji, trying to get the words, so you get the meaning of each word. In a satsang of this nature, where at this stage is such that I am only attracted to फूल को तोड़ के अपने कोट में लगा लो, that's it, all I am capable of doing. मैं अभी वो फकीर बना नहीं कि फूल को देख उसमें से परमात्मा को देख लूं। So I am not going to condemn myself because I don't have those eyes. I'm not going to overvalue what that. If he can see it, I'm not overvaluing him. I'm not undervaluing me. That's where I am at right now. I'm okay with it. And as soon as you become at peace with it, another miracle happens. Suddenly, उसके जो असली मीनिंग है वो जंप करने लगते हैं। कुदरत को के साथ कुश्ती करनी बंद कर दी ना। Have you ever observed whirlwind in an ocean? अगर उस whirlpool में शरीर पकड़ा जाए तो सबसे पहली टेंडेंसी शरीर की क्या है ना? उससे तैरने की कोशिश करता है ना? जितना वो तैरने की कोशिश करेगा उतना पानी उसको नीचे की तरफ खींचता है, उसके बराबर उसकी शक्ति तो है नहीं, तो और शक्ति खो देता है और डूब जाता है।
पर वर्ल्ड विल से निकलने का एक तरीका है, पता क्या? बिल्कुल हाथ पैर मारना बंद कर दो, छोड़ दो अपने आप को, ढीला छोड़ दो बिल्कुल। तो क्या होगा? पानी जो है वो नीचे की तरफ खींचेगा, है ना? तो नीचे क्या है? वर्ल्ड जो है जैसे नीचे चला जाता है वो कोन होती है ना? तो वो नीचे बहुत छोटा है। दैट मीन्स उसकी एनर्जी वहां पे मिनिमम है। द बॉटम मोस्ट पार्ट पे उसकी एनर्जी मिनिमम है। वहां से आप तैर के दूर जा सकते हैं वर्ल्ड से और ऊपर आ सकते हैं। अगर पेरिफेरिक में ऊपर आपने झगड़ा करना शुरू किया तो हारोगे। इसी तरह ही स्पिरिचुअल जर्नी में जब माइंड रास्ते में एक खड़ा कर देता है झंडा, तो झगड़ा बंद कर दो, समझौता करो। आई अंडरस्टैंड, यू वांट मी टू स्टे हियर, आई एक्सेप्ट।